Hello, my dear students. Welcome back to MS-CIT ERA सेशन नंबर 22 में। तो हम देखेंगे सेशन नंबर 22 का नॉलेज चेक टेस्ट फर्स्ट। तो उसके दो ही क्वेश्चन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन सेट पेज ओरिएंटेशन फॉर्म डैश टैब। सो इसका आंसर है पेज लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन नॉट कस्टमाइज मार्जिन्स इन एक्सेल। सो इसका आंसर है बी फॉल्स। सेशन नंबर 22 नॉलेज चेक टेस्ट 2 के क्वेश्चन है अबाउट पार्टनरिंग विथ एआई टूल भाषिनी एआई टूल के ऊपर क्वेश्चन है। सो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मेन फंक्शनैलिटी डज भाषिनी प्रोवाइड। सो इसका आंसर है बी ट्रांसलेट एंड ट्रांसक्राइब्स लैंग्वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ यूजर अपलोड्स स्पोकन मराठी कंटेंट ऑन भाषिनी, व्हाट would likely happen next? So इसका आंसर है बी, it will translate into English quickly. So next knowledge session number 22 knowledge check test 3 about partnering with AI Adobe podcast AI tool के ऊपर क्वेश्चन है। So first question है, how does Adobe podcast improve voice recordings? So इसका आंसर है ये, it removes backgrounds noise and enhances clarity. Next question, what is the key benefit of Adobe podcast studio beta future? इसका आंसर है बी, कन्वर्ट्स रिकॉर्डेड स्पीच इनटू एडिटेबल टेक्स्ट। नेक्स्ट सेशन नंबर 22 का सेल्फ पाथ लर्निंग टेस्ट अबाउट पेज लेआउट एंड रिव्यू टैब के ऊपर ये क्वेश्चन है। सो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द टाइम्स ग्रुप्स इन द पेज लेआउट टैब ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सो इसका आंसर है, it allows users to change the overall visual style of the entire workbook, including colors, fonts, and effects. Next question. The commands in the page setup group of the page layout tab in Excel are related to how they will look. इसका आंसर है ये वर्कशीट। Next question. Which of the following images display the option from the review tab to help you check spellings in your worksheet? So B, ये वाला image answer है. Next question. What is the purpose of the check accessibility option in Microsoft Excel? इसका आंसर है ये, it scans the document for potential issues that could hinder accessibility for people with disabilities. Next and लास्ट वाली टेस्ट है सेशन नंबर 22 सेशन कंप्लीशन टेस्ट। सो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, योर स्कूल गॉट अ न्यू कंप्यूटर व्हेन यू ओपन इट यू सी अ लार्ज बॉक्स विथ ports at the back. What is this part called? So इसका आंसर है सी, सिस्टम यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the system unit was missing, what would happen when they try to use the computer? इसका आंसर है बी, it will not process any data. Next question. Ravi opened his CPU case and saw a green board with many small chips. What is this board called? Its answer is B, motherboard. Next question. Your friend says the keyboard is also part of the system unit. Is this correct? So its answer is B. No, because it is an input device, not inside the unit. So next question, which parts of the system unit connects all hardware components together? इसका आंसर है B, motherboard. Next question, your school wants to increase the processing speed of computers. Which components should be upgraded? Upgraded. इसका आंसर है B, processor. Next question, a student is installing more RAM into a computer. Why might they do this? इसका आंसर है ये, to improve multitasking speed. Next question, if your hard disk fails, which problem might you face? A, answer है, computer will lose all stored data. Next question, why is the power supply unit important for the system unit? इसका आंसर है C, it provides usable power to all components. Next and last question, if the fan inside the system unit stops working, what is the risk? इसका आंसर है ये, components may overheat and get damaged.
तो इस तरह से ये था सेशन नंबर 22। तो हमने इसमें नॉलेज चेक टेस्ट, सेल्फ पाथ लर्निंग टेस्ट या है, टूल के ऊपर के क्वेश्चन आंसर्स एंड सेशन कंप्लीशन टेस्ट के क्वेश्चन आंसर्स हमने देखे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखकर आपके क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से सॉल्व कर सकते हो ताकि आपके मार्क्स माइनस ना हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।